Yeah. आ जाओ अंदर ही आ जाओ। नहीं मीटिंग चल रही है। So, very good afternoon to everybody. On behalf of Dr. KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये फाउंडेशन और लेट पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल ने इसको पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही डिफरेंट पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट फील्ड में लोगों को बहुत अवेयर किया, और उसी के ये कंटिन्यूशन में हमारी जो एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट की दो मीटिंग वी कंडक्ट एवरी संडे 12 to 1, तो उसी में आज जो हमारा सेशन है उसमें हमने लास्ट 2 मीटिंग्स में म्यूनिसिपल वेस्ट जो चैलेंज इन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट में इसको लिया था, उसमें हमने वी हैव डिस्कस दी वेरियस इशू, टेक्नोलॉजिकल इशूज, अदर इशू। तो इस प्रोग्राम में हमारे सभी एक्सपर्ट्स मेंबर्स का एंड जो व्यूअर्स हैं जो डॉक्टर के अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं और उससे जो है आज ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक मैंने जैसे बताया कि चैलेंज इन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट और failure of the system we'll talk about, because we have discussed the other issues in the previous 2 sessions. Before going to start, I'll just जो हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप्स मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, एंड हैप्पी मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण एंड अदर सच फेस्टिवल्स जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में मनाए जाते हैं, आज जो है उसमें उसकी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ, इसी नोट के साथ। तो हमने भी जैसे मैंने बताया कि लास्ट संडे और इसके बिफोर संडे, लास्ट 2 संडे, वी हैव डिस्कस दी वेरियस इशू रिलेटेड टू म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस, इंक्लूडिंग रूल्स, रेगुलेशंस एंड दी कोड डायरेक्शंस, टेक्नोलॉजीज, विलिंगनेस and funds and other such issue we have discussed in the last 2 meetings. We know that every municipality there are some or the other issues, maybe some may be having the funding issue, some may be issues the manpower issues, but situation despite best efforts by the government authority, municipalities, situation is not much improving, or because no proper implementation of rules, no ownership, there is always mixed waste. It is a situation of all developing countries. No source segregation, so source segregation is there. Very limited door-to-door collection of the segregated waste, limited decentralized waste facilities, limited material recovery facilities. There is lacking the micro planning. So these are the various very important issues, not only with respect to the all Indian municipality, but the all other developing countries. This is just very, very challenging. So in most of the municipalities, situation is very, very critical and looks like failure of the system. That's what the topic we have today. We discuss, going to discuss further, though from last about at least last decade, the situation is as compared to previous decade much improved, and the various organization, various private organizations, just like Sanjeev Kumar is here, his organization, the Ramki Enviro and the other different private organizations also helping the municipality a lot and doing very, very excellent work. But despite though had these efforts, the most of the municipality situation is very critical. So this is a kind of a failure of the system that way. And an essential prerequisite for a successful primary waste collection is the main thing. This scheme for primary waste collection, the very strong collaboration among the municipal authorities, community groups, household and private sector is very, very important. This need to be involved on every like a different jo hai steps that was. And also
the low-cost technical solutions are also prerequisite for successful such schemes, because every municipality, maybe the small one or the even bigger one, they cannot afford the big very cost-effective waste-to-energy technology like waste-to-energy plant or something like. So this is very, very important. We need to have very low-cost technological solutions for such municipality, because the fund situations also not very good. Good for all the municipalities. Maybe in Delhi or means Mumbai or some Bangalore situation, maybe the funds and other issues are not very critical. But for smaller towns, smaller municipality, the funds and other issues are very, very important. And so that they cannot even afford to have the waste to energy plant and big. That's what so these are the very, very important information we want to share that. Therefore, the very strong political and administrative will is required to management of the solid waste as per rules and very practical way. So, as we have selected this topic today, the municipal waste management failure in the system. So we'll discuss with this background. So since our friend who is expert in the field, Pradeep Khandelwal ji, it will be he is going to reach his house in maybe 5 minutes. So before again, मैं request संजीव कुमार जी से करूंगा कि आज की system, because your practical experience आपको है, because you are working with the different municipalities. तो sometime जो looks like situation like failure of system. तो आज के जो topic पे concluding session है आज का. So मैं request you संजीव कुमार जी to again speak to you, then we'll request further then for Pradeep Khandelwal ji. Yeah. Very good afternoon and happy Makar Sankranti to all of you. May this festival rejuvenate, regrow, and help each one of us to rejoice forever. So this festival is a festival celebrated for the harvesting season with sun as the god for showering blessings. So with that, I just want to tell that the topic taken is on the challenges of municipal solid waste management. Challenges, I think last two discussions has already been quite very deliberate, and it was discussed that what are the technological advancement which should be brought in for the municipal solid waste management, though both in terms of monitoring and. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. I'll request the other people to mute, please. जो भी और हैं, बाकी लोग जब तक संजीव कुमार जी हैं, बाकी अपना बाद में hand raise करें, तो will definitely come to you. तो मैं request करूँगा all other जो है सब mute कर लें, please. That we have been discussing on both the purpose of what are the challenges we had been there and what are the methods. I think Rupesh जी please आप थोड़ा mute कर लें. रुपेश जी please mute कर लीजिए please. I think रुपेश जी सुनने please mute कर लीजिए. रुपेश त्रिवेदी जी mute कर लीजिए. राम की रेवड़ी है. रुपेश जी प्लीज डिस्टरबेंस हो रहा है. रुपेश जी बड़ी वाले के लिए थी वो तो कामाक्षी इनको आप फोर्स अनम्यूट कर दीजिएगा रुपेश जी को. मिला दिया. हाँ प्लीज. हाँ संजीव जी. सर कंटिन्यू. संजीव कुमार जी प्लीज. हाँ I would just like to tell the problem or the challenges which can actionable point. The biggest challenge is about cities are not having the facility for management of the waste. The waste is getting generated, but none of the city as on today is having the place where the waste can be managed.
So the first important thing which is required is to have the place for management, and that requires having a place for कुछ आवाज में प्रॉब्लम है. municipalities have to look for a place where they can go for management of waste. Second part which is required to be looked into is that where do funds come from for the managing of such waste? And the funds being come from is the challenge. How do we make it sure? We being the democratic country, local bodies are governed by the political parties. So they have a challenge as to who will impose this user charge, or how will the funds get collected for the management of such activities. If we look into the basic genesis of municipal solid waste rules, the municipal solid waste rules are coming from the part of the EP Act. The Environment Protection Act is an umbrella act for the both air and water. Solid waste which gets generated from the different processes or activities becomes a part of pollution source for both air and water. Hence, the EP Act is applicable and MSW rules becomes a part of the EP Act. Now, in the EP Act, there are two basic principles on which the rules have been framed. The first basic principle is that it is precautionary principle, means any activity which is likely to have a generation of pollution has to be seen that it's how it can be tapped at the source. And second activity is that if anybody is generating pollution, then in that case, there has to be a polluter pay principle. So under the precautionary principle, the resources which requires to be there, whether in terms of space, whether in terms of infrastructure, whether in terms of manpower, whether in terms of machinery, whether in terms of money, whether in terms of management plan, and whether in terms of any material. So these 5, 6, 7 things have to be there for any precautionary principle to be adopted by any city or any activity or any human being or any institution for that matter, to ensure that the waste gets treated, processed, and disposed in a properly environmentally friendly manner. Once it happens, then there has to be a principle for payment, because money for all this manpower, material, machinery, management plan, and the processes involved in disposal or processing or reduction or reuse of the waste, there has to be sufficiently defined money. So who will pay the money? In the democratic process, either the government takes it in its own accountability as a budget to pay for that money, or it makes it sure that any polluter, whether it is Mr. Sanjeev, whether it is Dr. Anil, or whether it is Mr. Neeraj Tyagi, or all the people sitting here, or any individual for that matter, has to pay for it. Until unless the money gets properly organized and paid, these things will not get handled. So both the precautionary principle and the polluters pay principle needs to be applied. In the democratic country, and especially when it comes to ULP, which is governed by the political parties, these political parties have a intention to pay all this, not to charge anything from the public. Well, it's good that they don't charge from the public, but then how do they generate the resource needs to be devised and brought in advance, that how these polluted sources have to be handled. So to this challenge and to this concluding session, I would request all the participants and to give their thought about how these precautionary principles and polluters pay principle are applicable to meet the challenges of the municipal solid waste, which is burgeoning, which is growing every day,
And definitely it is going to see a situation where these cities will become into a collapsible situation, both in terms of air pollution, water pollution, and obviously to the aesthetics which the cities are really facing the problem. I would welcome any inputs or suggestions, and I leave it to Dr. Anil Kumar sir to take it further. Thank you, sir. Thank you, Sanjeev ji. Always your even last 2 sessions and today you have very, very important points that both the, I mean, whatever the government, the agenda, I mean, their political agenda, but definitely you need to fund for all the proper management and a proper the either allocation or the charging from public, and the both with respect to either maybe proportional principle or political principle, and depend on the situation to, I mean, it may be different for different municipality, but definitely has to be taken into account that way. So thank you, and then definitely we'll come back to you. Pradeep ji, can we you just you reach there? Can we? Khandelwal ji. Pradeep Khandelwal ji. 2 मिनट और एक बार एक किसी और को बुला लीजिए फिर स्टार्ट करता हूं। ठीक है पहुंच गया हूं, घर पहुंच गया हूं, बस सिस्टम ऑन कर रहा हूं। नो इशू कोई। तो मैं चाहूंगा हमारे आज कुछ न्यू गेस्ट ज्वाइन किया है, तो अगर इनमें से किसी के एक्सपर्ट व्यू हो तो अपना एक मिनट हैंड रेज कर दें, तो आई कैन कॉल दी जो है, बाद में तो हम करेंगे, लेकिन हमारे बिफोर प्रदीप खंडेलवाल जी, इफ एनीबडी इज वांट टू वॉलंटियर एंड टू से समथिंग, तो अगर पर्टिकुलरली संजीव पुरोहित जी, आप अनम्यूट कर लें प्लीज, और अनम्यूट करके आप जो है अपने व्यूज एक्सप्रेस करें। Sir, I would like to introduce this. It's Mr. Sanjeev Purohit is a known friend of mine, and he is very good. Yeah. Operating at Jodhpur with a. So you can say he's running an association of all in the name of Libra, and which has got people from different fields. Especially his interest is in the field of environment. So I had requested him to join, and henceforth he will be joining in all the meetings of HCFI. Yes. Thank you. Good afternoon to all. I am Sanjeev Purohit, advocate practicing in Jodhpur, but I have my passion for environmental law since last 10 years. And since the beginning of the NGT, I am deeply connected with all the matters which are going on in the NGT. It's fortunately in last 2 years, I have seen that the NGT is also taking utmost interest in the waste management matter. So finally, the environmental tribunal of the country has got the sense that this is the problem which is more alarming than any other pollution problem which is prevailing in the country. I am just taking forward what Mr. Sanjeev Kumar has said. The problem which is coming is I think the NGT should also think in a way. Various directions have been passed by the NGT. Recently, we have seen that 12,000 crore has been imposed upon Maharashtra, 900 crore has been imposed upon the Delhi MCD. But how this money will come, that is most important thing. And how this principle of polluter-based principle will be made applicable in the case of the pollution generated through waste. So there is a concept of user charges, which has first time being introduced in the statutory shape in the 2016 rules. However, most of the state governments as well as the municipal corporation has not made the user charges applicable for some their political agendas. But I think this is the only thing, if we press upon or if we raise our voice with regard to implementation of the user charges, then only there will be a bucket available with the municipal corporation in which the funds are coming in the form of user charges being paid by all the persons who are generating the waste. Then only these problems will be solved. Otherwise, each and every agency would try to shift their burden, financial burden, upon the shoulder of the other agency. And this is not going to solve the problem for long run. So the only possible solution, which I think if we want to implement this polluter-based principle. Hello. Yeah. Please, Sanjeev ji, continue. Yeah. So I think the only possible solution, if you want this polluter-based principle to be made applicable for the waste management, is to make sure that we should insist
for the either by way of policy advocacy or by way of litigation or through the directions being issued by the NGT or any other court, is to ensure that all the municipal corporations should impose this user charges, collect those user charges, and to be paid to the persons who are dealing with the waste management. Like it recently, after 3,000 crore being imposed upon state of Rajasthan, the matter has been challenged before the Honorable Supreme Court, where the Supreme Court, they have said that these 3,000 crore we are collecting, and we will certainly make sure that this 3,000 crore which has been imposed will be invested only for the waste management. And for that purpose, the state of Rajasthan has said that February onwards, they are going to impose this user charges to each and every household. They are in the process of making the mechanism for that, that what should be the level of user charges to be given by each household, looking to their number of, either by the size of the plot or by the number of persons who are residing there. And secondly, what should be its collection mode? Should it come through electricity bill or some other way, or online payment to be paid to the persons who is collecting the waste? But I think that the only possible solution for which the action is required to be taken by the group is to ensure that user charges should be implemented in its true letter and spirit throughout the country. Yeah. Yes, Sanjeev ji, still. Yes, sir. Yeah. Anything else you want to say, or we will come back to you then? I think so. The question which has been posed by by Mr. Sanjeev Kumar, I think in my point of view, the answer is this only. Yes. So thank you. Very valid point, because the NGT has made the environment compensation or damage compensation to a number of state government municipalities, and I think maybe Delhi, maybe Mumbai, maybe in the Rajasthan or some other states. So this is made, including in the Calcutta. So I think it's very important for all these state governments. So definitely with this, maybe going for the user charges, and unless the proper mechanism for the end-to-end solution is not there, including the funds, including the manpower, including the technologies and other. So this is not going to be solve the problem, because this is a gap is increasing, particularly in generation and the management, that this ultimately, whatever is not processed, what is not managed technologically, is going to a landfill and again creating a problem. So this is very, very important. So now I'll request my friend, one of the expert in the field, Sri Pradeep Khandelwal ji, जो कि आए more than 30 years experience, particularly in Delhi, जो very critical जो है city रहा है waste management में, and lot of work has also been done. So मैं request करूंगा प्रदीप खंडेलवाल जी से, जो we presume this looks like a failure of system, जो municipal waste management में है, तो उनके view अपने express करें. Over to प्रदीप खंडेलवाल जी. नमस्कार सबको, मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरी आवाज आ रही है ना? या बिल्कुल जी आ रही है. एक्चुअली मैंने ही अनिल कुमार जी को कहा था कि इस सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करें. पता नहीं संजीव कुमार जी क्यों हेजिटेट करते हैं सच्चाई बताने में. ये तो ओपन फोरम था, इसमें सच्चाई बताई जा सकती थी. संजीव कुमार जी, हमने कितने पापड़ बेले हैं कोई भी चीज कराने के लिए. चलिए, तो इशू मैंने तो सच्चाई बताई कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैसे का है. नहीं, पैसे का नहीं है. चलिए सबको नमस्कार. देखिए, मैं केवल आज पॉइंट रेज करूंगा और उस पॉइंट पे फिर अगर टाइम मिलेगा तो इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वेस्ट मैनेजमेंट में अवेयरनेस करने के बावजूद भी लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते. एक तो हम लोग जो अवेयरनेस का एक तो सिस्टम जो बनाया हुआ है उसमें कुछ लिमिटेड लोगों के बीच में अवेयरनेस होती है, मास में अवेयरनेस नहीं हो पाती. उसका रीजन क्या होगा, वो अलग अलग रीजन है, अलग अलग चीजें बाद में डिस्कस करेंगे. दूसरा एक है कि कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोगों ने एक अनटचेबिलिटी जैसे बोलते हैं ना, वो माना हुआ है. कुछ फ्रैक्शंस ऑफ लोग वेस्ट को टच ही नहीं करना चाहते. तीसरा,
एक निम्मी, अगर किसी के यहाँ भी वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी काम करना चाहे तो अड़ोसी पड़ोसी सब उसको नहीं करने देते। तो ये 3 चीजें तो जनरल हैं जो पब्लिक से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इसके बाद जो हो जाता है कि मल्टीपल एजेंसीज हैं, कोई भी चीज प्लान करने के लिए एक इंडिविजुअल के पास सपोर्ट नहीं है। जो मल्टीपल एजेंसीज हैं इस वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में, लैंड किसी के पास है, पैसा किसी के पास है, काम किसी को करना है और अप्रूवल किसी को देनी है। तो ये सब चीजों की चक्कर में बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट का। एक 3 वर्ड मैं आजकल बहुत कोशिश कर रहा हूं कि पता नहीं क्यों इंडियन डिक्शनरी में गायब हो गए हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला वर्ड है रिकंसिलेशन। आज की डेट में किसी को भी कोई भी डाटा का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। जनरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लैंड फिलिंग हो रही है। अगर चारों चीज को हम अलग अलग ऐड करें तो कुछ और रिजल्ट आता है, इंडिविजुअल ऐड करें तो कुछ और रिजल्ट आता है। कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन का रिकंसिलेशन नहीं है, जो एक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। किसी ने कुछ भी बोल दिया, जैसे अभी 3-4 एपिसोड पहले डॉक्टर अनिल ने जब सीएनडी पे बात चल रही थी कि दिल्ली डीपीसीसी का डाटा है 3500 टन जनरेट होता है, 5500 की फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब जो फैक्ट मैं बता रहा हूं। और दिल्ली सरकार मतलब जो दिल्ली कॉर्पोरेशन ही है वो कहती है कि 7000 जनरेट हो रहा है। अगर आप 4 अलग अलग डाटा देखें, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखें, दिल्ली सरकार का देखें, अप्रूवल्स का देखें और उसका देखें तो कहीं कोई मैचिंग ही नहीं है। तो एक तो रिकंसिलेशन नहीं है, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिसने जो डाटा दे दिया वो ही सही है। चौथा है कि हम इस पे ऑडिट नहीं करते हैं किसी भी चीज का। अब अगर स्वच्छ सर्वेक्षण का जो आप 2016 से लेके 2022 तक के सर्वेक्षण हो चुके हैं, तो किसी भी सिटी का आप डाटा को आप ऑडिट करके देखें तो कंसिस्टेंसी कहीं मिलेगी ही नहीं। तो एक ये जो ऑडिट एक है वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। मैं आज केवल चैलेंजेस और मिसिंग चीज की वजह से बता पा रहा हूं, जिसकी वजह से हम लोग सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर शाह ने कहा था कि लोग छत पे वेट वेस्ट को प्रोसेस कर लेते हैं, तो क्यों नहीं करते? एक अकेला कोई करेगा तो उससे तो सक्सेस नहीं होगी। चौथी जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, आप छोटा सा करो और इतना उसको एक्सपोज कर दो कि आपने सब कुछ कर लिया। मतलब इसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं छोटी सी प्लास्टिक कलेक्ट करता था और कह देता था मैंने बहुत ज्यादा प्लास्टिक कलेक्ट कर ली। तो ये चीजें जो चीजें हो रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस या गुड प्रैक्टिसेस बहुत छोटे लेवल पे हैं, उसको मास लेवल पे किसी ने करने की कोशिश ही नहीं करी है। सबको अपना बताना है, मेरे को फर्स्ट प्राइज लेना है इसलिए मैंने बता दिया मैंने ये किया है इसलिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। कल नोएडा अथॉरिटी ने ही सारे सेक्टर्स में प्राइजेस दिए हैं। अब 5 स्टार होटल को अगर आप फर्स्ट, वो तो हमेशा आएगा ही मतलब फर्स्ट प्राइज में। उन्होंने रेडिसन्स को, नोएडा में केवल रेडिसन्स को ही फर्स्ट प्राइज दे दिया। तो यह स्वच्छ सर्वेक्षण में आप देख लो, मतलब मैंने कंपैरेटिव बना के भी दिया था कि ये आपका जो सर्वेक्षण का असेसमेंट का प्रोसीजर है वो गलत है, क्योंकि या तो एक आदमी एसेस कर रहा हो तो उसको सब चीज सही लगती है, 10 आदमी उसको एसेस कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं है जो सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। तो ये सर्वेक्षण में जितना भी असेसमेंट हम लोग अपने आप को एक्सेस करते हैं सर्वेक्षण के रिजल्ट से कि ये सिटी बहुत अच्छी कर रही है और ये सिटी खराब कर रही है, चाहे वो ओडीएफ के डाटा हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का डाटा हो, चाहे वो सेग्रीगेशन का डाटा हो, चाहे
किसी भी चीज का डाटा अगर सर्वेक्षण की वेबसाइट पे देखें तो डिफरेंट है, डीपीसीसी सीपीसीबी की वेबसाइट पे देखें तो डिफरेंट है, और लोकल परसेप्शन पब्लिक परसेप्शन लेके तो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलता है। तो एक ये गैप जो है ये बहुत बड़ा गैप है। इसके बाद जब किसी भी चीज का यहाँ पे टेक्निकल रिव्यू नहीं है, प्लांट लगा दिया, चल रहा है नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या उसके पीछे परेशानियां हैं, कोई नहीं ना सोचने को राजी है ना समझने को राजी है। एक अगर हम लोकल बॉडीज के लेवल पे बात करें तो यहाँ इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं कि किसी को सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ पाता, उससे पहले उसका ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कमिश्नर का टेन्योर फिक्स है 3 साल ही है, या उससे नीचे जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या टेक्निकल हेड्स हैं या टेक्निकल लोग हैं। तो जो लास्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विलिंगनेस टू वर्क। ये केवल स्टाफ में, मतलब सरकारी स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अगर संजीव कुमार जी चाहे तो बता सकते हैं, इनके यहाँ भी वो इशू है विलिंगनेस टू वर्क। इनके अभी 10-5 हजार आदमी काम कर रहे होंगे इनके अंडर में, तो ये बता सकते हैं कि 25% तो मतलब एक्चुअल काम कर रहे हैं या ओवर स्ट्रेस्ड है, 25% एवरेज काम कर रहे हैं, 25% बहुत कम काम कर रहे हैं, 10-5% ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होंगे, जो इधर उधर की पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं। मतलब ये भी प्राइवेटाइजेशन में भी, और जो लास्ट है इसमें कि बहुत ज्यादा मल्टीपल एजेंसीज हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, एनजीओ है, कंसेशनर है, डिपार्टमेंटल है। तो ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब अभी हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने बायोमिथेनाइजेशन कर लिया, वेस्ट एनर्जी लगा लिए, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन सबको एग्रीगेट किया जाए तो पूरे इंडिया के सिनारियो में देखा जाए तो लगभग नेग्लिजिबल है। तो ये फैक्ट पता नहीं क्यों छुपाया जा रहा है, ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। आप भारत सरकार में चले जाओ तो नहीं पता चल पाता, दिल्ली सरकार में चले जाओ तो नहीं पता चल पाता, सीपीसीबी जो हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी है उसके पास चले जाओ तो नहीं पता चल पाता। अब तो वो होता है जो बुलवाया जाए, जो दूसरे को अच्छा लगे वो बोला जाता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये नॉट ओनली कि वेस्ट मैनेजमेंट में, ये एयर पोल्यूशन में भी देखो हम भी उस पे रहे हैं, बिकॉज जैसी गवर्नमेंट नीड होती थी उस हिसाब से जो है वो मतलब प्रेस रिलीज जाती थी। दैट वाज, ये बात भी है फैक्ट। प्रेस रिलीज तो चलो एक अलग चीज है कि वो करना है हमें, लेकिन उसकी वजह से जो फैक्ट है वो छिप जाते हैं, जहां पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर अटेंशन नहीं जा पाती। अब संजीव कुमार जी शायद मैंने सब कुछ ओपन कर दिया तो शायद बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे। फाइनेंशियल की वैसे कोई कमी नहीं है, disbursement of funds is a problem, procedure of disbursement of fund is a problem, funds is not at all a problem. नहीं, कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी में, बिकॉज अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आई विजिटेड ए सिटी, यहीं मैं दिल्ली गवर्नमेंट से डेलीगेशन गया था, हम भी गए थे और भी थे हमारे फ्रेंड थी नियर बाई, बिल्कुल दिल्ली के ऊपर नहीं करूंगा वो, और वहाँ पे आई विजिटेड, उनका देखा, दे हैव सब कुछ सेट किया, बट जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के सम मतलब जो कहो टॉप मैनेजमेंट, दे आर नॉट रेडी टू रिलीज द मनी बिकॉज उनके पर्सनल इशू थे। दैट वही डिस्बर्समेंट ऑफ फंड, प्रोसेस ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ फंड इज अ प्रॉब्लम, फंड्स इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ, संजीव कुमार जी तो बहुत इसके भुगते हुए हैं। मतलब रिकमेंडेशन होने के बाद भी कि फंड रिलीज कर दो, फिर फंड रिलीज नहीं होता। तो ये इश्यूज तो हैं सर, बिल्कुल। वही मल्टीपल एजेंसीज वाली बात आ गई। खंडेलवाल ने बिल पास कर दिया, अनिल कुमार जी ने अप्रूव कर दिया, और फाइनेंस वाले ने उसे रिलीज ही नहीं करा। तो ये मल्टीपल एजेंसीज हो गई। तो उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है।
Sir, I completely align to I think almost everything what you have said. You have spoken about how minute things of executions are there. What I am trying to tell and what we should look forward definitely is a finance is one such framework where whether it is to be done by one single party for the single objective, those things are there. But most of the cities, when we talk of 600 dumping grounds, it is 600 dumping grounds. And with the speed of what the economic activities and growth of the population in urban areas going, if this 600 dumping grounds has been come up for the last 20, 30 years, in next 3 years, this 600 will become 700 or more, many more. Yes. So where is the problem? The problem is Sanjeev Kumar is very blatantly, and Mr. Pradeep Khandelwal and Dr. Anil Kumar, everybody in on this call, is blatantly generating waste with no accountability that I should pay for it. If I am knowing that I have to pay for this much of 250 gram per head, I think let us assume, let us calculate every day that is it 250 gram or 500 gram nowadays we are producing. Yeah. So if the day I know that I am generating maximum waste and I am chargeable for it, for example, if I am taking more than 260 liters, 135 liter per day is the norm of an individual to be consumed in India. We know that every one of us is, most of us, I think my water bill is coming something around more than 800 to 900 rupees in Hyderabad in a private society I pay. So 900, अरे भाई पानी कम यूज करो, वेस्ट मत करो, आरओ का पानी बाल्टी में रखो जिससे कि वो पानी पौधों में डालना. These are the things we are now assuming. So the day I know that I generate more waste, forget about me working for sustainability and whatever, but I am generating maximum waste which is just throwing blatantly anywhere. So this is the problem. And if I have to pay for, say, suppose 1,000 rupees in the as a maintenance charge to a society which I pay, and 1,000 rupees is being contributed, which whether that society wala is paying to the municipal authorities or the collecting agency is a different story. So waste generation has to be captured at the polluter pay principle is one. Second, as a precautionary measure, we have to have sufficient infrastructure. Sufficient means sufficient. If there is 4 trucks required, it has to have 10 trucks required. If there is 40 manpower, knowing that you said 25 people, 25% is willingly working, 25% does not work, and 25% does not even attend, and 25% is the ghost employee. So there has to be 100% for that 4 truck. And if that is the case, and then where it should go, the segregated waste should go A portion, B portion, C portion, and you see how economics work. So everything is related to punitive action, and to that punitive actions we have to pay. Now, when it comes systems improvement in terms of monitoring, definitely, sir, definitely the data requirement or the format or the online monitoring required to the Central Pollution Control Board is very much required. Monitoring as to framework as to what should be the payment mechanism for this particular service. Electricity, sir, is privatized today. Electricity, whether it is Rajdhani or Tata's or what, we are very clearly paying them everything, and by default there are many housing societies where prepaid electricity is being paid now. So those mechanisms has to be there is what I am trying to put. But what you have said is practical on ground as an execution. Now, both these things needs to be intervened and see that how it can take it for the betterment. Thank you, sir. Yeah. As far as the punitive action is concerned, संजीव जी मैं आपको बता दूं, आई थिंक एनजीटी ने पिछले 1 साल में अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए हजारों करोड़ रुपए हर कारपोरेशन पे लगभग लगा दिए, और कोई भी कारपोरेशन ने इवन अ सिंगल पेनी पे नहीं किया. एक तो ये चीज हो गई. ऑन द अदर एंड, एज ए लोकल बॉडी मैंने हजारों लोगों को फाइन कर दिया ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, और एक भी रिइंबर्समेंट नहीं कर पाया मैं. तो वहां पे जो प्यूनिटिव एक्शन एंड देयर इन्फोर्समेंट,
is also a challenge for in India. तो थैंक यू प्रदीप खंडेलवाल जी, संजीव जी, आई विल कम बैक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आई थिंक सम हैंड इज रेज 1+, कौन नाम नहीं आ रहा है, इफ यू कैन अनम्यूट, या प्लीज यू इंट्रोड्यूस एंड देन आई थिंक यू कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, मैं रुचिका सेठी टक्कर हूँ, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने जो पहले आया। जी, मैं सिटीजन वॉलंटियर हूँ और 2013 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खास तौर से एंड सब्सिक्वेंटली एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे मैं वॉलंटियरिंग कर रही हूँ। और 2 सिटीजन समूह, वाई वेस्ट योर वेस्ट और सिटीजन्स फॉर क्लीन एयर, जिसका ट्विटर हैंडल है क्लीन एयर भारत, वो हमने शुरू करा है। इसमें कुछ डॉक्टर्स, बार साइंटिस्ट्स एंड RWAs एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स को सबको जोड़ा और हम लोग ये बढ़ा, मतलब एक मूवमेंट हमने शुरू करा। सबसे पहले मैं 3-4 चीजें बस मैं आप सबके सामने मैं सबमिट करना चाहती हूँ। सॉरी, मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा। आई कुड जस्ट हियर द कंक्लूजन ऑफ प्रदीप जी एंड मैं 2-3 पॉइंट्स आगे आप सबके मैं रखना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द चैलेंजेस और द, जिसको हम लोग परसीव्ड फेलियर्स भी कह रहे हैं। सबसे पहली चीज जो पिछले 10 सालों में जो समझ आया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे काम कर रहा है, और जहाँ तक बात प्रदीप जी की जो थी कि एक मास मूवमेंट अभी तक नहीं कायम करा गया, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मास मूवमेंट कायम करने के लिए जिस तरीके से जो पब्लिक आज की तारीख में बहुत जानकारी रखती है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी हुए हैं, लोगों को मालूम भी है कि अब कूड़ा आपको कैसे सेग्रीगेट करना है, बट जो मूवमेंट है वो बड़ी तादाद में इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है द वे द फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वेस्ट कंसेशनर एग्रीमेंट्स आर फॉर्मुलेटेड। आप जिस तरीके से पैसा देंगे आपको वही मिलेगा। बात आप कुछ भी करिए, लेकिन जो आप दाम देंगे आपको वही मिलेगा। और जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं हमारे, हम काफी सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हुए हैं। दे आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द C&T एंड टिपिंग फी मॉडल। C&T meaning collection and transportation, and tipping fee which we all know which is on the waste load. तो जब आप किलो के हिसाब से जब आप पैसा दे रहे हैं तो वहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। Our contracts have to be remodeled on a waste recovery parameter. और मतलब आपने उसमें से कितने संसाधन निकाले। अगर हम म्यूनिसिपल वार्ड लेवल रिसोर्स रिकवरी प्लान, जिसको हम लोग पुश भी कर रहे हैं, उसको अगर हर वार्ड में लागू होता है और उसमें जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं कि जहां देखा गया है जो लोकल पार्षद्स हैं या एक पॉलिटिकल पेट्रोनेज टू दी अंडरबेली भी अपना जो चलता रहता है, किसी ने अभी बात करी थी इनफॉर्मल सेक्टर भी है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं। ऑल ऑफ दिस गेट्स सॉर्टेड आउट द मिनट you have your payments, the taxpayer money, the user fee that you are in addition collecting, because अब 2016 से user fee भी charge होने लगी है, and we are not recovering and utilizing that money towards the processing of the waste. We are primarily saying there are these garbage waste collection points, एक गाड़ी दे रखी है, collection system भी एक ही contractor को दे रखा है। So what we need, where the solutions are, if I may kindly submit that. Yeah. One is that we need to move away from a C&T model, and you can scrutinize all the municipal corporations models, and they are primarily then जब tendering होती है, they are the larger corporations who bid for it, including the WTE lobby. Per se, the technology of a WTA and all, I'm not getting into. We are based, our discussions and submissions are based on what the ground realities are.
which is that today one person is coming to collect your waste. Even जैसे अब हमारी सोसाइटी निर्वाणा कंट्री जहाँ बहुत मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आप जिस तरीके से अपना कूड़ा बाहर रखेंगे, आप 3 तरीके से रखिए, 1 तरीके से रखिए, वो वैसे ही कलेक्ट होता है एक ही कार्ट के अंदर। और वो जो वेस्ट वर्कर है, जितना वो अपना निकाल पाता है वो निकाल लेता है। अगर कंपोस्टिंग चल रही है आपके सेक्टर के अंदर, आपके सोसाइटी में, तो बहुत अच्छी बात है। वो तभी भी उसको एक डायरेक्टिव है कि भैया तुम उसमें से निकालो। लेकिन अगर हम एक सेग्रीगेटेड कलेक्शन करें, जब हम बात करते हैं कि सब लोग वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं कर रहे, अभी प्रदीप जी ने बोला कि हम लोग वर्कर्स मोटिवेटेड नहीं है, संजीव जी ने अभी बोला कि polluter पे मॉडल होना चाहिए। With the sort of the disposable income, people can still pay. they'll say कि ठीक है, जैसे यूके में है कि आपने अगर more than 500 grams दिया, so you have to pay more. वो खलता है क्योंकि there's a higher cost. अगर आप पेमेंट भी यहाँ पे आप लोगों को कहेंगे, they are very happy to pay it. They'll still dispose the way it is because it is being collected by a single contractor. So you bifurcate the collection, और इसका एक बहुत बढ़िया मॉडल है, आप लोग उसको स्टडी करिएगा, बैंगलोर में चल रहा है, वार्ड नंबर 160। आई थिंक मैं चाहूंगा कि अब नाउ बिकॉज हमारे पास टाइम बस गोइंग टू बी, अगर स्पेसिफिक कोई पॉइंट हो तो विल बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम थोड़ा बस यही पॉइंट है जस्ट ऑन। एंड माय लास्ट पॉइंट वेरी क्विकली आई विल सम अप is that just the way COVID was taken up by the Ministry of Health, and everybody was, and there was a leadership also from the political leaders, and it was considered, I mean, it's a pandemic, and the way the response system was. So what we have observed is that there is an enforcement capacity for all the rules that have been formulated by MOEFCC. However, the correlation between solid waste management and health is still not known. People are considering it from the environment point of view. So my submission is to include the Ministry of Health, include the public health officers, and make them understand how the mismanagement is actually another large pandemic in the making. So, thank you, Madam Rishka, Madam. I think very very important. Yeah. डॉक्टर शैला है यहाँ पे, जो वर्ल्ड की रिनाउंड एनवायरमेंट। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इफ शी कैन, मैडम, जस्ट शैला मैडम, जस्ट अगर आप थोड़ा सा फ्यू मिनट्स इफ यू कैन, बिकॉज विल हैव थोड़ा टाइम हमारे पास आज थोड़ा सा कम है एंड कंक्लूडिंग सेशन है। सो आई रिक्वेस्ट, क्योंकि इस सेशन को हम दो लास्ट संडे 2 बार में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज ही कंक्लूडिंग है। मे बी 5-10 मिनट्स हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट मैडम शैला मैडम, अनम्यूट कर लें प्लीज। शैला मैडम, डॉक्टर शैला गोंडल, डॉक्टर शैला गोंडल, if you want to, yeah, please. Hello, assalamu alaikum. Yeah, sure, please. वालेकुम सलाम। I was a little away, thank you. मेरा ख्याल था बस देर में आई, that's why थोड़ा टाइम लग गया। जी बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत देर से ज्वाइन किया, मेरी अभी मॉर्निंग है, और लेकिन मेरे पास लिंक आया था, तो आई थॉट कि मुझे ज़रूर सुनना चाहिए आप लोगों को। तो इट्स रियली नाइस टू हियरिंग यू पीपल, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं नॉर्वे में रहती हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया में आप लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उठा रहे हैं, कंसर्न है, और फिर सिटीजन वॉलंटियर बात कर रही हैं, और माशाल्लाह वो एक वॉलंटियर हो के भी इतनी वेल अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों से, जो टेक्निकल भी हैं और जो हेल्पफुल भी हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बेसिकली आई डोंट नो कि आप सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ही बात कर रहे हैं या और भी मुद्दा है जो आप लोग उठा रहे हैं। For today would only the solid waste, but other we take different topics, but today was only solid waste.
that is really nice. मैं फिलहाल सिवाय इससे कमेंट्स करने के मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन of course it's one of the major management, क्योंकि बाकी जो वाटर मैनेजमेंट है या एयर मैनेजमेंट है वो तो इतनी नजर नहीं आती, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सॉलिड वेस्ट तो बहुत अपेरेंट होती है और बड़ी नजर भी आती है, तो आप लोग उस पे काम कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू. मैं एक छोटी सी चीज में प्लीज गुस्ताखी माफ मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों के हिसाब से, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि जो गैप्स आ रहे हैं इन द डेटा और जो मैं and allow me to say the word misinformation भी हो रहा है या चीजों को छुपाया भी जा रहा है, ये शुरू हुआ है जब से ज्यादा तवज्जो दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान SBM. सो अगर हम जो ULB की जो मिनिस्ट्री जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर हम ज्यादा अहमियत दें और कैंपेन एंड इवेंट्स एंड मिशंस, because just now even the joint commissioner SBM is in charge of the SWM department. The commissioner has washed his hands off. वो मोटा माटी वो देखते हैं और उनके जो parameters of grading है, they are as to the data management. So if we can get away from data management, remove ourselves from the real world into the real world and bring back the foundation, जो बुनियाद है, जो ULB का जो बुनियाद है, और पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो टीम्स होती थी और उनके ऊपर अगर हम उनको कहें कि आप SWM रूल्स फॉलो करिए, ना कि योर द मिशन की जो भी इनके जो पैरामीटर्स है, रैंकिंग्स हैं, एक्सेट्रा, बिकॉज उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा डेटा मैनेजमेंट हो रहा है कि हमने इतने सारे इवेंट्स कर दिए, इतने सारे हमने प्रचार कर लिया. 90,000 crores money has already been spent into the advocacy. We don't need the money for advocacy. We don't need free bins distribution. We don't need the campaigns. We need a effective, effectual, corresponding collection system, and the entire focus in the end, I'll just say, जैसे आपकी कैलिफोर्निया में हुआ था, where Recology with the sole partner, which was and they brought in legislation also, that anti-incineration, क्या हम अगर because if we are going to be creating the capacity for जलाना, तो फिर obviously आप generate करते रहेंगे. So waste minimization laws were brought in, waste minimization laws, anti-incineration bills, and thirdly, waste recovery programs. The concessionaires are paid on recovery. So automatically the pull happens. Informal sector, your NGO partners, blah, 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 all the stakeholders, the RWAs, then they are giving the waste as a resource. They are not dumping the waste as a waste. Yeah. Sorry for intervening. Thank you, madam. Thank you for very important good suggestions. So we have just already 1 o'clock and the festival. So I'll request 1 or 2 part. Dr. Saha, you want to say anything today? भाई डॉक्टर दीपांकर साहा जी हमारे CPCB में एयर पोल्यूशन के एडिशनल डायरेक्टर, बहुत रेनाउंड पर्सन एनवायरनमेंट में. तो साहा साहब, कुछ यू वांट टू से एनीथिंग? मैं सभी को आज का फेस्टिवल ग्रीटिंग्स देना चाहूंगा और बता दूंगा कि हाउ टू सिंक्रोनाइज ऑल द सीक्वेंसेस so that we are able to complete 360-degree angle in the waste management. जैसे खंडेलवाल साहब ने बहुत सारे इश्यूज को बता दिया, एंड जो रियली मिनिमाइजेशन भी हमारा एक पॉलिसी होना चाहिए कि इस घर से हम इतना कूड़ा से ज्यादा नहीं लेंगे. राउंड रॉबिन करेंगे तो जो पार्टिसिपेंट है सबका नाम लेगा तो कम होगा. हाँ, तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए. मैडम ने बहुत ही अच्छी चीज बोला. हम लोग सिर्फ इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर ना बात करके हाउस होल्ड लेवल में व्हाट इज पॉसिबल उसके ऊपर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कलेक्शन भी कम हो, जनरेशन भी कम हो, तो कलेक्शन भी कम होना चाहिए. एंड एवरीथिंग शुड मूव्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. यस, एवरीथिंग शुड बी मूव्ड इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे. ऑन गैप जब एनालिसिस हो ही गया, उसके ऊपर हम फ्यूचर में सब मिलकर काम करना पसंद करेंगे. Thank you very much once again to all. Thank you, Saha Sahab, for your input. And
we just to have one speaker, we can take one. Anybody want to say anything? Otherwise, we'll conclude finally because today festive day है और मैं ज़्यादा time आज नहीं extra चाहूँगा. So anybody कोई अगर जो है आज सर हाँ संजीव सर मैं चूंकि डॉक्टर शैलजा सॉरी करेक्टली रिप्रेजेंट डॉक्टर शाहाला and Dr. Dipankar Shah has raised a very valid observation that waste minimization and waste going to incineration should be the last option. Yeah. As a Indian citizen and as a practitioner for waste management as a company who is doing 23 locations in India, we are completely wanting this to happen. But I'll tell you, this appears to be as a very positive foregoing guy as an individual, appears to be a distant dream in the country. And let us face this fact. It may look good for European and American countries, but as a country, we are finding it very difficult. And the very simple reason is that we are a highly democratic country where everybody has got different say. Why do I say this? I am strictly propagating that each one of us should be charged minimum 1,000 to 2,000 rupees on the waste generation per month. The day it will get implemented, things of minimization, things of segregation, things of ensuring that the waste, proper segregated waste goes to proper plants so that we don't have a incinerator. Incinerator per se, as a business house, we say it's a highly capital intensive project with lot of uncertainty. We don't have parts which are available in the country. We don't have parts which are free from duty exchanges. We have these whole capital intensive industry is a supreme dependent on with very low ROC. With that particular thing, investing in money, investors are very not secure to put in the money. But do we have a solution? Are we there to live in the filth? Do we continue? Do we afford to be in the filth? What do we want? We have to have a balance, whether we start punitive actions from every individual to pay for the waste generated, or we go with such large investment. So in that case, in the present scenario, incineration becomes an individual unforceable activity. We have to go for it. That is what I just want to convey. Thank you. For viewers, we have to keep balance. I do not agree with you, Sanjeev ji. I do not agree with you. भारत का सिनारियो अगर आप देखो तो 90% लोगों पे खाने के लिए पैसे नहीं है. वो जो वेस्ट जनरेट करेंगे उसके पैसे कहां से देंगे? 80% को हम सब्सिडी देते हैं तो हम उससे कैसे वेस्ट कलेक्शन के चार्जेस ले सकते हैं? इट इज द सिस्टम वी हैव टू डेवलप कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल की जरूरत पड़ेगी, बट इज नॉट कि हम पब्लिक से पैसा लें और पब्लिक के लिए काम करें. नहीं संजीव जी, प्रवीण जी, मैंने वही चीज अभी बोली कि अगर आप वेस्ट कॉन्सेशनर को कहेंगे कि आप अगर टिप करेंगे, उसको आप गिराएंगे, आप जलाएंगे तो आप उससे पैसे. मैं आपसे भी एग्री नहीं करता मैडम, बिकॉज ऐसे भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2018-19 तक मैंने डिपार्टमेंटली काम किया, फिर भी मैं नहीं कर पाया. मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूँ. मैंने 2019 तक डिपार्टमेंटली काम किया, तब भी मैं फेल रहा. ये जरूरी नहीं है कि हम कंसेशनर को तो एक मिथ बना दिया कि कंसेशनर को टिपिंग फी देते हैं इसलिए सब गड़बड़ करता है. ऐसा नहीं है. संजीव जी कंसेशनर है मेरे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी मैं टिपिंग फी ही देता हूँ, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, एक मिथ बना हुआ है कि क्योंकि टिपिंग फी से पैसे दिए जाते हैं इसलिए वो वेस्ट की जगह दूसरी चीज कलेक्ट कर आप ये, मैं माफी चाहती हूँ, यहाँ पे खांडसा गांव में यहाँ के बीजेपी के जो खुद के जो स्पोक्स पर्सन है एंड द फायर डिपार्टमेंट ने खुलासा करा है, चूंकि टिपिंग फी दिया जाता है. कोई होता है, लेकिन सब नहीं होते. आप अगर वर्ल्ड ओवर ट्रेंड आप देखिए, the minute you get if you're going to be paying for what he's going to be collecting and dumping, how is he going to be interested in a waste recovery program? Can you name me one municipality today, one municipality, you worked with the departments,
Give me a name of one single municipality which is paid on recovery basis. MCD ने किया सर. MCD For ने 4 what? project लगाए हैं. 4 project for waste recovery? Yeah. Which ones are these? ये ओखला waste to energy plant, Gazipur waste to energy plant. Please don't call WTE a recovery program. It's a burn technology. Let us talk about waste minimization. MNRE का हम ज़्यादा discussion ना करें. No. Then I'm sorry, your fundamentals are only not there. They're not for a sustainable waste management. You can't have a burn technology calling it sustainability. We are then talking 2 different things. नहीं ऐसा नहीं है मैडम. बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि दिल्ली के, अगर आप पूरा दिल्ली का पूरा रिव्यू करें 2004 से लेके 2022 तक का, तो आपको बहुत चीजें पॉजिटिव मिलेंगी, बहुत चीजें नेगेटिव भी मिलेंगी. मैं ये नहीं कहता कि नेगेटिव ही नहीं. चलिए, आई थिंक दिस इज द वेरी लॉन्ग डिस्कशन पॉइंट. मैं इसलिए जनरल बात करना चाह रहा था सारी, कि पोल्यूशन जो पे, मतलब पोल्यूशन पे प्रिंसिपल वाला होना चाहिए. वो जैसे कि जो भी इंडस्ट्री लग रही है, जो भी लग रही है, उनके साथ जरूरी है, इंडिविजुअल्स के साथ इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 90% लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है. जो मैं वो वैसे भी इतना जनरेट नहीं करते हैं. इफ यू ब्रिंग इन द वेस्ट मिनिमाइजेशन लॉज, व्हिच इज प्राइमरली the street vendors which are generating, and the smaller shops, you have sustainable alternatives like पत्तल दूना अपनाओ and city को साफ स्वच्छ बनाओ. Whereas कहना बहुत इजी है, कहना बहुत इजी है. मैं तो सब कुछ कर चुका हूं. नहीं, I am sorry. I think we'll connect offline because शायद आप हकीकत नहीं जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है with the waste concessionaires. मैं आपको दिखाऊंगी. I think now I have to sorry for, because हम फेस्टिवल डे है और ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसको अगर हम और अभी 1-2 सेशन लें तो भी चल सकता है, लेकिन अब हमारे पास बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट टॉपिक, तो आज हम ये सेशन पे we had very important discussions points काफी निकल के आए, and in points पे need to be, because ये हमारा लाइव सेशन होता है and उसके बाद भी बहुत से लोग देखते हैं, तो I think it will be, the recommendations may be very important for both the government authorities and also the जो public representative हैं और public different NGO हैं और हमारे constitution हैं, सबके लिए. So we have to work together. That is very important. Integrated approach. That is the only thing. इसी situation, because हम एकदम से change करके नहीं हो सकते. We have to keep balance अभी time being. हमारा because different behavioral change जो है बहुत time लगेगा. तो हमने भागीदारी में दिल्ली गवर्नमेंट में we have conducted so many workshops. काफी change आया था segregation में, but एकदम से change करना is very difficult. So we have to keep balance. But definitely आज very interesting topic जो continue रहा है. इसके कुछ points हम लेकर के वर्क इस पे काम करेंगे आगे. हो सकता है फील्ड में प्रैक्टिकली इसको वी हैव टू वर्क टुगेदर. तो इसी सबके सभी जितने भी हमारे एक्सपर्ट में आज जो है संजीव जी, प्रदीप खंडेलवाल, रुचिका मैडम एंड शैला मैडम एंड अदर ऑल, जो भी आज कुछ लोग हमारे नीरज जी वगैरह को टाइम नहीं मिल पाया आज हम बोलने का, और भी हमारे जो भी बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए आज फेस्टिव की वजह से, तो डेफिनेटली सभी का थैंक्स करते हुए ये डॉक्टर के अग्रवाल जी की जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर के HCFI, इसी तरह की वेरी इंपॉर्टेंट जो पब्लिक रिलेटेड जो पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे काम करती है, फील्ड में भी काम करती है बहुत से, और ऑनलाइन भी अवेयरनेस और इस तरह के डिस्कशन पॉइंट पे करती है. तो हम ये एनवायरनमेंट का जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं, और नेक्स्ट संडे फिर हम डिफरेंट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, और इसी के साथ सबको अगेन जो आज फेस्टिवल की बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे. थैंक यू.